Hi, my name is Puneet Prabhu. I am from Mumbai. I have around 7 years experience in costing and analytics. I have done cost accounting and I am a SAP FI consultant. I had a long time dream of opening a restaurant. So many years I was trying to open with my building friends, but it couldn't happen somehow. So I started looking for some videos on YouTube and I found Gopal Kamatso's video. His means he thought means I have seen many videos of his like how to plan means what you want, how to open your restaurant, then how to see a proper location where you should open your restaurant, how should be the means what should be the capital required, minimum capital required, what are the licenses required, then what should be a menu and some proper plan. So his videos really helped me. Thanks to Gopal Kamatso, it was really helpful. I would like to thank him and carry on his good work by posting videos, free videos on YouTube, and grow his community. Thanks to Gopal sir. Now I have a restaurant in Navi Mumbai with my brother and my wife and his wife in the name of Illusion the Arabic Cafe. It's been around. We opened it around December 2019, and now it's been 4 months, and we have been getting profits. This year by month, it is going double the income. So thank you, thank you, sir, Gopal Kamath sir. Wish you best of luck. Hello everyone, my name is Biali. I'm from Chennai. I got to know about Mr. Gopal through YouTube because I wanted to start a restaurant and I just typed how to start my own restaurant one day, and then his face popped up. And since then I've been following him for the past one and a half years, and I was so glad to encounter his new training session, free WhatsApp online course, which is something that not every trainer or not every person would want to do. But we are so happy and glad that Mr. Gopal has done such a wonderful thing to help a lot of people who are wanting to start their business. Today is the fourth day of the online free program on WhatsApp, and we are really, really looking forward to it. And in the past 3 days, we have had immense in-depth knowledge about very particular topics, especially on how to find the right concept for my restaurant, and what is the right location, how do I choose it, how do I go about filtering what kind of a place, and who are my target clienteles. So that is something really, really interesting, and which is very much in need for every restaurateur in the initial stages, I believe. And thank you so much, Mr. Gopal, for sharing your knowledge with us and being so selfless in helping us build our own restaurants. And we are really happy to have a mentor like you. We're looking forward to today's class in a big way. Thank you so much, sir. Hi, my name is Shruti and I'm an engineer. I have worked in IT industries for around 5 years. Later, I realized that I always wanted to be an entrepreneur and have my own restaurant business. So I decided to open a restaurant and started researching regarding the information online. But to my surprise, not much information is available online. You see, the restaurant owners don't really reveal their secrets. But once, when I was surfing through YouTube, I found a channel called Get Your Restaurant. This channel is being run by Mr. Gopal Kamath, and I quickly enrolled for his online training program. And trust me, with this training program, I really learned a lot. Mr. Gopal Kamath is a great teacher. He reveals a lot of practical tips, and he is open to all the information as far as a restaurant opening is concerned. He has given a lot of secrets, lot of practical tips, and a lot of information, which has helped me a lot. Earlier, before joining the training program, I really knew nothing, and after completing a few sessions, I realized that I have climbed 100 steps above,
as far as knowing the information is concerned. He explains each detailed concept one by one, like whether it be choosing a location, whether it be deciding the concept, whether it be pricing, licensing. He has got information and tips of on every topic, and he explains it in a very beautiful way. He is an enthusiastic, he has got a lot of positive energy, and he conducts these sessions with a complete dedication. I can see the hard work that goes through behind, whether it be creating slides, whether it be noting all the information that needs to be told to the students, and he does it in the best possible way. So I would like to thank him for really conducting these sessions and helping a lot of people know about the restaurant business. Not much is available online. I think he is doing a great job, and I would like to wish him all the very best for all his future endeavors. And I would like to also thank him for doing this, and for being a great teacher. Thank you. Hi, this is Manish, and I had bought the restaurant training from Gopal Kama sir. Before going through this training, I was having a lot of confusion in my mind whether I should go for a convenience store or I should go for a food business. After taking this training from Gopal Kama sir, where Gopal Kama sir had taught very deep knowledge about the restaurant industry. After taking this training, right now I'm in the position to open my restaurant very successfully, and I know all the secret formula of running a successful business. So guys, if you are going for a restaurant business, you should invest in this type of courses, because in internet you will not find this type of deep knowledge. है बलवंत दिस साइड। पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच रहा था। बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत सारे आउटलाइन ड्रॉ किया, लेकिन उन सारे प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे एक बड़े अमाउंट में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना था, और बिना किसी प्रॉपर प्लान के अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर देना, ये मेरे लिए बेवकूफ़ी होती। फिर रिसेंटली मैंने गोपाल कामत सर का रेस्टोरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। ऑनलाइन क्लासेस थी, करीब 10 से 12 दिन इस कोर्स का ड्यूरेशन है। और इस कोर्स में ऐसा नहीं है कि गोपाल सर आपको किसी बुक से या फिर कहीं और से कोई थ्योरी लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं। गोपाल सर ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में उन चीज़ों को रिवील किया है जो कि शायद ही कोई रेस्टोरेंट ओनर या होटल ओनर मतलब आपके सामने अपने सीक्रेट्स को रिवील करना या फिर उस चीज़ को सक्सेसफुली कैसे मैनेज करे, ये शायद ही कोई आपके सामने रिवील करे। गोपाल सर ने उन चीज़ों को रिवील किया है जो कि आई बिलीव शायद ही आज के डेट में कोई आपको उन सारे टॉपिक्स को बताए। और गोपाल सर ने इन चीज़ों को इतनी बारीकी से एक्सप्लेन किया है, ये सच में मतलब इन डेप्थ कोर्स ही है। अगर आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है और अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना कैपिटल किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने से पहले इस कोर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको वो सारी डिटेल पहले से पता हो। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या गलतियां आपसे हो सकती हैं, कैसे उनको सुधारना है, कैसे उन गलतियों को मेक ओवर करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो आपके प्लान में रिस्क नहीं होगा। जैसे कि मैंने जो प्लान बनाया था अपना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले, उसमें इतनी सारी खामियां थी कि क्लास करने के बाद मुझे उन खामियों के बारे में पता चला। बहुत सारी गलतियां थी और उन खामियों को दूर कैसे किया जाए ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था उस वक्त। मगर ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्लास के बाद मुझे सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हुई कि जैसे मतलब वो सारी खामियां एक साथ दूर हो गई मेरी उस प्लान की। गोपाल सर ने उन सारी चीज़ों को इतनी बारीकी से समझाया है, जैसे आपको वो कैपिटल कैसे रेज़ किया जाए,
लोकेशन सिलेक्शन कैसे हो, प्रॉपर्टी डीलर से कैसे आप डील करें, स्टाफ रिक्रूटमेंट कैसे हो, कैपिटल रेस कैसे हो, फंडिंग कहाँ से होगी आपकी, मेन्यू कैसे बनेगा आपका, रेस्टोरेंट मैनेज कैसे होगा, किचन सेटअप कैसे होगा, रेस्टोरेंट का प्लानिंग कैसा होगा, ये A to Z कॉन्सेप्ट कैसे सेलेक्ट करें रेस्टोरेंट का, किस कॉन्सेप्ट में किस टाइप के कस्टमर को टारगेट किया जाए, आपका कैश फ्लो कैसे बढ़ेगा, कैश मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को गोपाल सर ने इस कोर्स में बहुत ही बारीकी से समझाया है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से ये कोर्स मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ है कि अब मैं बिना किसी झिझक के अपने रेस्टोरेंट में अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ आराम से। और इन माय पर्सनल ओपिनियन आपको इस कोर्स में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए ताकि आपके रेस्टोरेंट को आपको रन करने में रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि गोपाल सर ने अपने डे टू डे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उनका, शायद 18 साल का उनका एक्सपीरियंस है इस होटल और रेस्टोरेंट में, मे बी आई रॉन्ग, बट वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है और क्या गलतियां हुई उनसे, कैसे वो उन गलतियों से ओवरकम हुए, कैसे उन्हें वो सुधारे ताकि ये गलतियां फिर से हमसे ना हो सके। दैट्स वाई आपको इस कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और गोपाल सर को मेरी ओर से हैट्स ऑफ है सर। Hi, myself Nishisha. I'm from Vadodara, Gujarat. This video is basically to thank Gopal Kannan sir for his workshop of how to get your restaurant. He's a restaurant owner and hotelier. Sir, thank you very much. The lectures were amazing. We really learn a lot from your lectures, and I am so thanked that I have such a knowledge about your given video on locations and each and every concept that you cover, and you have how to tackle a customer and each and every detail that you give to us. Thank you, sir, really.